नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर along the lines x plus 3y equal to 4 and 6x minus 2y equal to 7. Then which of the following is true for PQRS? Which of the following is true for PQRS बोला है। यहाँ पे कितना पॉइंट दिए, ए बी सी डी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल एंड रोम्बस। सही है। अभी इसका सॉल्यूशन देखो, let the two given line be L1 equal to x plus 3y equal to 4 and L2 equal to 6x minus 2y equal to 7. These lines represent the diagonal of the parallelogram PQRS. है ना? These lines represent the diagonal of the parallelogram क्या है यहाँ पे, PQRS. So देखो, to determine the properties of a parallelogram, we should examine the relationship between its diagonal. A key property related to the type of parallelogram is the angle between its diagonal. की प्रॉपर्टीज क्या रहती, एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल, ये दो पी क्यू आर दिए। ओके देखो भी आगे देखो, एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल देखो, लेट्स फाइंड द स्लोप ऑफ ईच लाइन। जैसे लाइन दिया है एक एक्स प्लस 3y इक्वल टू 4, तो उसका स्लोप क्या था, उसको अरेंज करेंगे अपन क्या, थ्री वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, तो y इक्वल टू माइनस 1/3x प्लस 4/3, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज एम एक्स। एम इज अ स्लोप, तो इसको m1 से डिनोट करेंगे, तो स्लोप क्या गया इसका L1 का -1/3। फॉर L2 6x माइनस 2y इक्वल टू क्या है 7, तो 2y इक्वल टू 6x माइनस 7, तो y इक्वल टू 3x माइनस 7/2, तो स्लोप ऑफ L2 इज m2 इक्वल टू 3। सही है। नाउ लेट्स चेक द प्रॉपर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या, -1/3 इंटू 3, प्रोडक्ट लेंगे ना m1, दैट इज -1। अगर निगेटिव आता है देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द डायगोनल इज -1, मतलब डायगोनल क्या होगी यार, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेगेटिव -1 आता है तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम देखो, पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, rhombus a parallelogram with all four sides equal in length and its diagonal are perpendicular bisector of each other. Rectangle parallelogram with all four angles equal to 90 degrees and its diagonal are equal in length. Square, a square of a parallelogram that is both a rhombus and a rectangle. Its diagonal are perpendicular bisector of each other and are of equal length. Perpendicular bisector है ना। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देखो भी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अ पैरेललोग्राम दैट इज अ साइक्लिक मस्ट बी रेक्टेंगल। अभी इन चारों में से कौन सा है, ये डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो, our finding is that the diagonal of PQRS are perpendicular, मतलब based on the property listed above, the parallelogram with a perpendicular diagonal is a rhombus, parallelogram with a perpendicular diagonals। देखो, let's evaluate the given option। जैसे rectangle, rectangle is has a diagonal of equal length, we only know they are perpendicular, not necessary equal in length, है ना। A parallelogram with a perpendicular diagonal is not necessarily a rectangle। Okay, a square is a rhombus with each equal diagonal. Why it is a rhombus? Because its diagonal are perpendicular. So we do not have enough information to confirm that its diagonal are also equal in length. Okay, therefore it is not necessary a square रहेगा। Cyclic quadrilateral, a cyclic parallelogram is a rectangle as discussed for option A. It's not necessary a rectangle। Next, rhombus. This is consistent with our finding. A parallelogram whose diagonals are perpendicular and precise a rhombus। मतलब डायगोनल क्या है, परपेंडिकुलर इंटीजर है ना। ये रोम्बस की डेफिनेशन है। रोम्बस देखो, पैरेललोग्राम विद ऑल फोर साइड्स इक्वल इन लेंथ and its diagonal are perpendicular bisector of each other। So final answer is a rhombus। Rhombus is D option है ना। Given that the diagonals are perpendicular, PQRS must be a rhombus। D option is correct।